गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज आप दो ही हो क्लास में, ये तो मतलब बाकी आज बिजी हो गए क्या स्टूडेंट्स? लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट मोर, है ना। गुड इवनिंग प्रियंका। वेट करते हैं 1-2 मिनट और। सर हाँ प्रियंका सर मुझे स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। बोलो। सर जैसे ये शुगर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, उनके बारे में ये भी पता रखना है सर वो कब सेटअप हुई है? नहीं ऐसा मतलब इंडस्ट्री कब सेटअप हुई है, मतलब कोई स्पेसिफिक कंपनी? हाँ सर, जैसे कभी अगर नवरत्न भी है, इन हाँ सब के नाम याद रखना जरूरी है? नवरत्न, हाँ नवरत्न थोड़ा याद रख लो क्योंकि नई कंपनी है पूरे पूरे इंडिया के अंदर। नवरत्न उन्हीं को बोला जाता है। हालांकि अब तो शायद नंबर बढ़ गया है थोड़ा सा। सर और 40। हाँ है ना, महारत्न, महारत्न और नवरत्न को थोड़ा सा याद रख लो क्योंकि हजारों कंपनीज के बीच में ये कुछ एक इंडियन कंपनीज हैं जिनको नवरत्न और महारत्न, और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक नेचर की कंपनी है, तो भाई इतना नाम पता रहे कि हाँ ये कंपनी नवरत्न या महारत्न में आती है। ओके सर। हाँ, सर ये जैसे जो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऐसे भी नाम याद रखना है क्या सर? हाँ हाँ डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल ये याद रखना है, बिल्कुल फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड याद रखना है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। सर जैसे LIC वगैरह ये सब कब सेटअप हुए ये याद नहीं रखना? नहीं, डेट और टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़े वेंचर्स में से लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में सबसे बड़ा वेंचर है। ओके सर। तो इस तरह से याद रखना है। LIC का कोई स्पेसिफिक, जैसे आप अगर बिजनेस स्पेसिफिक कोई मैनेजमेंट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो जैसे IIFT है या जेट है, तो उसका अगर कोई बड़ा अभी जैसे IPO आया है ना, तो किसी एक ऐसे बड़े कॉर्पोरेशन का अगर IPO आया है तो वो आपको याद रखना है बस। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर कोई मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप होता है वो आपको याद रखने की जरूरत है। कोई पर्टिकुलर मुद्रा और सेक्शन, नाबार्ड और ये सब, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही पता रखनी है, ये सब क्या हाँ काम नाबार्ड वगैरह के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता रखो क्योंकि ये गवर्नमेंट की बहुत सारी रूरल बेस्ड स्कीम्स के लिए बहुत लीडिंग NBFC है ना। तो ये इसका डिटेल जो मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मैंने आपको बताया बस उतना पता रखो, और ज्यादा कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, उतना ही रखा गया है जितने आपके एग्जाम, जिन एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो उतना उनके पर्टेनिंग ही रखा गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी सिर्फ कहाँ पे चीज? हाँ अभी देखो मैं डिस्कस करूंगा ये सब ना, इसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक का और कितना का समझना है मैं बस, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास, और ऑलरेडी देख रहे हैं 10 मिनट से कोई नहीं आया, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम देखते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या इस नवंबर मंथ में हुआ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है PM मोदीज यंग ऑथर मेंटरिंग स्कीम युवा 2.0। ये 2.1 पहले भी लॉन्च हुई थी, तो ये यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए ये कहिए कि इसको, ये वर्जन 2 है। इसमें बेसिकली जो 30 साल से नीचे के जो यंग ऑथर्स हैं उनको प्रमोट करना है इंडिया और इंडियन लिटरेचर को दुनिया में। युवा 2.0 जो स्कीम है वो बेसिकली एम्स टू आर्टिस्टिकली एंड इंजीनियसली
emphasize the viewpoints of young generation of the authors on the issue of democracy, institutions, event, people, constitutional ideals, past, present and future. ये प्रोजेक्ट है, हर महीने इस तरह की स्कीम्स के ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट होता रहता है, तो इसलिए स्कीम जो है न्यूज का पार्ट बनती रहती है. In the light of yes, you know. Now, in the light of last edition's enormous effect, which include a broad participation from young and aspiring author in more than 22 languages. This was the development, and some of the development related to युवा scheme has happened earlier month also. उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पहाड़ी कम्युनिटी जम्मू एंड कश्मीर के लिए. आर्टिकल 370 एंड 35A के रिमूवल के बाद अगस्त 2019 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना जो है वो पॉसिबल हो गया है. तो जो कोटा है एसटी कोटा इन जम्मू एंड कश्मीर 7% post in government jobs and educational institutions, and the Gujars and the Bakarwals community were getting ST benefits since 1991. Paharis were given a 4% quota in OBC category from January 2020, and Center formed a Justice Sarma Commission in March 20. However, it seemed to upset the Gujars and Bakarwals. ये ऐसा कुछ dispute वहां पे हो सकता है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट किया है, हालांकि काफी पहले से चला आ रहा है. उसके बाद कूनो नेशनल पार्क, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जहां चीता अभी लाए गए हैं उनको किस नेशनल पार्क में रखा गया है, तो कूनो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में आता है. सेंटर हैज एस्टैब्लिश्ड ए टास्क फोर्स. द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी would support the cheetah task force operation and provide all essential assistance. The Principal Secretary of Madhya Pradesh Forest and Tourism, as well as Dr. Amit Malik, Inspector General of National Tiger Conservation Authority in New Delhi, will be among the task force 9 members. तो NTCE के जो हेड हैं इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल, दैट इज डॉक्टर अमित मलिक है. इसके बाद additionally, the task force for cheetah introduction project monitoring will keep an eye on the cheetah's adaptation to the Kuno National Park ecosystem and their hunting prowess. This is the another development of the news the month of November. गुजरात मोधेरा इंडिया का पहला 24x7 सोलर पावर्ड विलेज बना है. गुजरात में मोडेरा एक विलेज है इंडिया का जो पहला कंप्लीट सोलर पावर विलेज बना है, जहां पर बिजली जो है वो सोलर पावर से दी जाएगी. दिस इज मोडेरा which is famous for centuries old sun temple built during the Chalukya, will also be known as solar powered village. ये एक डेवलपमेंट है. उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का. Supreme Court upholds the constitutionality of economically weaker section quota. ये जो 5 जजेस की बेंच थी जिसमें 3:2 के रेशो से ये जो बिल है ये पास हो गया और ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मिल गई. और इस डिसीजन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यूयू ललित और जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी एंड जेबी पर्दीवाला, ये 5 जजेस थे जिनमें जस्टिस यूयू ललित ने फेवर में जो डिसीजन है वो नहीं दिया था, लेकिन बाकी के जो और जजेस हैं 3 जजेस है स्पेशली उन्होंने
डिसेंटिंग जजमेंट जो इशू किया था वो किया था जस्टिस रविंद्र भट्ट ने और चीफ जस्टिस यू ललित ने। बाकी 3 जजेस ने इसको constitutional validity provide करी थी। Justice Maheshwari read out the verdict saying that 103rd constitutional amendment for the EWS quota was legitimate and did not contradict the core structure of the constitution। तो कोई भी बिल जब पार्लियामेंट प्रपोज करती है, वो प्रपोज करने के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो चेक की जाती है, वो चेक करता है सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी बोला जाता है। समझ गए? तो द रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन ही एक्सप्लेन इज एन अफर्मेटिव एक्शन टूल यूज्ड टू एश्योर द ऑल इंक्लूसिव मार्च टुवर्ड्स द एम ऑफ एन इक्वल सोसाइटी। तो इस फॉर्म में ये जो अमेंडमेंट है ये हो चुका है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो 4000 किलोमीटर का होगा वाराणसी से। यूनियन गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर लग्जरी रिवर क्रूज बिटवीन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश and Assam's Dibrugarh in January 2023, going to launch that in a bid to provide impetus to inland waterway development in India। तो इसके कुछ एक हाइलाइट्स हैं कि वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज जो है is expected to be run on the public private partnership PPP मॉडल। ये 50 दिन का क्रूज होगा, will set sail from Varanasi on 10th January and cover 4000 kilometer, passing through Kolkata, Dhaka before reaching the Bogeybil in Dibrugarh district of Assam on March 1st। Ganga Vilas cruise will sail from Ganga Vilas उस cruise का नाम है, from Varanasi Dibrugarh in the longest river journey of 50 days covering 27 river systems and visit over 50 tourist sites including World Heritage sites। So this will be the single largest river journey by single river ship in the world and would put both India and Bangladesh on river cruise map of the world। Cruise is the first set cruise liners that will be run on PPP model with the memorandum of understanding signed between the Inland Waterways Authority of India and Antara Luxuries Rivers Cruise and JM Baxi River Cruise river। ये एक और डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद NCW launches National Commission for Women launches 4th phase of Digital Shakti campaign। ये चौथा चरण है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने डिजिटल शक्ति कैंपेन लॉन्च किया है टू एम्पावर एंड एडुकेट गर्ल्स एंड वीमेन ऑनलाइन। है उनको ऑनलाइन जो डिजिटली ट्रेंड और स्किल्ड करने का। गोल ऑफ डिजिटल शक्ति 4.0 is to empower women with digital skills and knowledge they need to confront any inappropriate or illegal online behavior। Together with Meta and Cyber Peace Foundation, NCW started the campaign। So this you can consider also as a campaign। This is the Digital Shakti campaign। This new stage will prove to be significant in establishing safe online environments for women by teaching them how to use technology effectively to stay safe online। Digital Shakti has increased in engagement of women and girls online। Thereafter, few other details are there that you may read once the document is available in Drive also, that this document will be available in next tomorrow or day after tomorrow। उसके बाद India's government releases its first suicide prevention strategy, National Suicide Prevention Strategy, first of its kind government initiative is to make suicide prevention a top priority for public health, was unveiled by Ministry of Health and Family Welfare। A government claims that strategy will lay the groundwork for promoting mental health and preventing suicides in ensuing 10 years। आने वाले 10 साल के अंदर जो भी ये जो स्ट्रेटेजी है ये किसी तरह से जो भी मेजर्स इसमें डिप्लॉय किए गए हैं सुसाइड को प्रिवेंट करने का कोशिश किया जाएगा। बाय 2023 the policy hopes to reduce suicide mortality in nation by 10%।
जो ओवरऑल आंकड़े है उसका 10% कम होने का टारगेट रखा गया है. Strategy offers a framework for numerous stakeholders to carry out initiatives for nation's suicide prevention. In the first 3 years, it aims to create reliable suicide surveillance systems. In addition, it aims to create psychiatric outpatient units that will offer suicide prevention services through the digital mental health program in all districts over the course of following 5 years. These are few other lines which you please read. Thereafter, this is the very highly curated information. The rest of the information I found neither for the point of view of written examination and for the point of view of discussing somewhere or writing some descriptive writing related questions, completing your or passing your multiple choice questions entrance exams. Thereafter, economy, banking and finance. अभी क्या हुआ है economy, banking and finance में? India's space economy is expected to be worth $12.8 billion by 2025. इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है उसकी वो करीब 13 बिलियन डॉलर 2025 तक बनने की संभावना है, with the satellite launch services segment set to witness the fastest growth due to the increased private participation according to the report released. अभी जल्दी ही अगले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा स्काईरूट टेक्नोलॉजी और कुछ एक प्राइवेट कंपनीज जो अब इंडियन एजेंसी इसरो के साथ मिलकर के जो भी स्पेस लॉन्च स्टेशन है वहां से ये सर्विसेज और इस तरह के मॉड्यूल्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं. India's space economy was pegged 9.6 billion in 2020. In 2020 is expected to touch 13 billion by 2025. According to the report titled Developing the Space Ecosystem in India, focusing on inclusive growth. In dollar terms, the satellite services and application segment would be the largest with the turnover of 4.6 billion by 2025, followed by ground segment of 4 billion. The satellite manufacturing stands at $3.2 billion and launch services at $1 billion. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो सैटेलाइट बनवा सकते हैं और अपने कंट्री की स्पेसिफिक सैटेलाइट को लॉन्च करा के उनकी सर्विसेज को अपने कंट्री के लिए लॉन्च स्टेशंस को भी हायर कर सकते हैं या इवन सर्विसेज ले सकते हैं. तो दैट इज द these are some of the aspects where revenue is generated. By these services revenue will be generated. Growing demands for smaller satellite is set to boost satellite manufacturing in country. It will attract global startups in the sector to help incubate space tech companies. Here said the report released by Indian Space Association ISPA and Ernst & Young EY. Thereafter, RBI to launch pilot project of digital rupee in wholesale segment. Digital rupee का pilot project RBI वो launch करने वाली है wholesale segment में. ये today मुझे हटा देना चाहिए था, but कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसे दिसंबर मंथ में डिस्कस कर रहे हैं. ये नवंबर 2022 मंथ का डेवलपमेंट है. डिजिटल रूपी will be used for settlement of secondary market transactions in government securities. In a statement, RBI said that use of e-rupee is expected to make the interbank market more efficient. Settlement in central bank money will reduce transaction cost by preempting the needs for settlement guarantee infrastructure and for collateral to mitigate settlement risk. तो ये डेवलपमेंट है कि डिजिटल रुपी जो है जो ई रुपी का कंसेप्ट है उसको होलसेल सेगमेंट में आरबीआई लॉन्च करेगी. उसके बाद आरबीआई said that based on learnings from this pilot, other wholesale transactions and cross border payments will be in focus for future pilots. 9 banks, State Bank of India, Bank of Baroda, these are some, and some of the private banks are there.
those have been identified for participation in this pilot project. The first pilot use of digital rupee in the retail segment is planned for launch within the month in the select location in closed user groups comprising customers and merchants. तो अभी ये होलसेल सेगमेंट में, उसके बाद रिटेल सेगमेंट में भी ये एक पायलट टेस्टिंग की जाएगी. Thereafter, India's industrial output jumps 3.1% in September versus 0.8% fall in August. ये एक ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ है. नवंबर मंथ में रिपोर्ट रिलीज हुई है. India's industrial output measured by index of industrial production IIP grew 3.1% in September, supported by double-digit increase in electricity generation. This is compared with a contraction of 0.8% in previous month, a growth of 4.4% in September 2021. सर ये डेटा याद रखना है? नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है, बस ये याद रखना है इस साल में कंपैरेटिवली पिछले साल के. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा. और सिर्फ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं याद रखना है कि इसमें से कोई एमसीक्यू बनेगा, बट ओवरऑल जो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इससे एनहांस होगी कि अभी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है. और जो उस ट्रेंड से दो चीजों का पता चलता है कि जो इंडस्ट्रियल और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनका क्या इंटेंट है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में काम कर रही हैं. दैट इज व्हाई these indexes are worth understanding. ठीक है. So India's electricity sector output grew in double digits, that is 11.6% year on year to 187.4 on IIP in September, Index of Industrial Production. For the month of September 2022, quick estimates of Index of Industrial Production with the base of 2011 and 12 at 133.5. तो इंडेक्स को कैलकुलेट करने का एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है. कई तरह के फॉर्मूलाज होते हैं. वो फॉर्मूलाज आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे जिसमें इंडेक्स बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम को रेफरेंस लेकर के तैयार किया जाता है और वहां से होने वाले चेंज का एक रिफ्लेक्शन दिया जाता है. सो दैट हियर जो बेस ईयर है दैट इज 2011 एंड 12. 2011 और 12 में क्या स्टेटस था. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई रिपोर्ट की. आरबीआई रिपोर्ट सेज द इंडियन इकोनॉमी on track and likely to grow at 7% in 2022 and 2023. तो करंटली जो इकोनॉमी है हमारी वो कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर में जो ड्यू टू पैंडेमिक जिस तरह से थोड़ी क्रैश हुई थी उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गई. 7th edition of Handbook of Statistics on Indian States 2021 and 2022 is released by Reserve Bank of India. It covers the sub-national statistics on socio-demographics, state domestic products, agriculture, price, wages, industry, infrastructure, banking, and fiscal indicators across the states during various time periods ranging from 1951 to 2021 and 2022. So 2 new sections have been included in the recent edition, that is health and environment. So this is basically general awareness in the form of current development. Current developments. ठीक है. तो अब ये जो रिपोर्ट है ये किन किन वेरिएबल्स को ये कंसिडर करके चलती है, इसका एक फॉर्मल आपको जो स्टेटमेंट है या जो आप कह सकते हो कि इन वेरिएबल्स को कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उनको इस एटलीस्ट हमें ये पता है कि अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है अगर वो आई है तो उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए, दैट वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन एंड दैट वी कैन understand also.
Indian economy showed remarkable resilience to multiple consecutive shocks it experienced since early 2020. It retained the macroeconomic stability and sustained the momentum of economic growth's recovery. Macroeconomic outlook is positive in the current fiscal year that is 2021-2022 and 2022 to 2023. It is still impacted by global headwinds. अभी भी जो भी दुनिया में चल रहा है उससे अभी भी असर है. उसके बाद बात आती है मुद्रा लोन का जो डेटा आया है. मुद्रा लोन का जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो सिर्फ 3.3% है पिछले 7 साल में, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है. जो कोई भी लोन जो बैंक बांटते हैं या गवर्नमेंट, बेसिकली मुद्रा एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन बैंक के थ्रू होता है. अगर उसका एनपीए इतना कम है, इट मींस जो फंड रिलीज किया गया वो अपना काम कर रहा है, वो प्रॉपरली ऑपरेट किया जा रहा है. Over 7 years since launch, borrowers of Mudra loan, essentially micro and small enterprises, have paid their EMI, equated monthly installment to banks, and non-performing assets of banks for Mudra loans, including those extended during the COVID-19 pandemic, when small enterprises were the worst hit, are lower than the average NPA of the sector as a whole, the data obtained under the Right to Information Act. Nearly 5,000 crore loans or 16.32% of total bank asset in Maharashtra under Pradhan Mantri Mudra Yojana to help small businesses are unpaid as of June 2022 as per the official data. Prabhani district is in the backward Marathwada region of Maharashtra is the highest NPA at 60.54%. As per the data, 30,019 crore was taken as loan under the Mudra scheme as of June 2022 by more than 52 lakh borrowers in Maharashtra. Out of this much crore by 16.6 lakh borrowers has been classified as NPA. As far as Mudra loan is concerned, out of total outstanding this much crore in March, 695.5 crore was NPA, which is about 11.2% of total outstanding loan in Haryana. So that the measure, that is the 3.35%, it is basically 3.35%. This is basically the aggregation, or you can say the average. Now the type of Mudra schemes, that is, there are 3 types of Mudra schemes. We know that is the Sisu, Kisor and Tarun. 50,000 तक की स्कीम, 2 लाख तक की स्कीम और 10 लाख तक की स्कीम, इनको शिशु, किशोर और तरुण बोला जाता है. उसके बाद ट्रेड एंड इंडस्ट्री में देखते हैं क्या डेवलपमेंट रहा है. अदानी ग्रीन कमीशंस वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट. ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो कमीशन किया है. रिन्यूएबल एनर्जी मेजर अदानी ग्रीन लिमिटेड कमीशन वर्ल्ड लार्जेस्ट wind solar hybrid power plant with 600 megawatt capacity in Jaisalmer, Rajasthan. So further development, you can read about that the co-located hybrid power plant will not only reduce intermittency of renewable energy power, but shall also help the nation to optimal utilization of transmission network. Earlier this year in May, AGEL had operationalized India's first hybrid power plant with a capacity of 390 megawatt in Jaisalmer in Rajasthan. Basically, this is the development in the field of renewable energy. Thereafter, Prime Minister Modi or Government of India laid a foundation stone of C-295 transport aircraft manufacturing plant in Gujarat. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of C-295
transport aircraft manufacturing Vadodara, Gujarat. C-295 aircraft transport aircraft for the Indian Air Force will be manufactured by Tata Airbus. Apart from making 40 aircraft, this facility at Vadodara will be manufacturing additional aircraft for Air Force requirements and exports. By 2025, India aims at defense manufacturing scale to cross $25 billion. And the current government has given access to the private sector in weapon and ammunition also. So in defense corridor has opened to the private sector. So defense corridors being established in Uttar Pradesh and Tamil Nadu would power this scale. Apart from making 40, yes, they thoda sa ye repetition hai. Thereafter, yes, aircraft built in India would be supplied from 2026 to 2031, and first 16 flyaway aircraft are scheduled to be delivered to Indian Air Force between September 2023 to August 2025. Thereafter, further details are, this is financials, we need not to discuss that in detail. Yes. In September last year, India sealed this 21,000 crore deal with the Airbus Defense and Space to procure 56 C-295 aircraft to replace Indian Air Force aging Avro 780 planes that enter services in early 1960s. Under the deal, Airbus will deliver first 16 aircraft in flyaway condition from its final assembly line in Seville, Spain within 4 years, and the subsequent 40 aircraft will be manufactured and assembled by Tata Advanced Systems in India as part of the industrial partnership between two companies. So, what is the feature of C-295 MW? Is a transport aircraft of 5 to 10 ton capacity with contemporary technology. Aircraft has maximum speed of 480 km per hour. It can also operate on short, unprepared airstrips, as it is capable of short takeoff and landing. कम जगह चाहिए इसको उड़ने और उतरने के लिए. Now, AquaConnect become India's first Indian fishery startup to get ISO 2770 certification. AquaConnect, technology-driven full-stack aquaculture inputs and outputs platform with embedded fintech, supported by physical and digital 5 digital distribution network, has received ISO certification for information security management, ISM. The certification comes on the back of the ISMS, Information Security Management System. And this is basically the first Indian fishery startup which got this certification. Those who now AquaConnect has implemented this, need not to discuss that in detail, but once you will be reading that, इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिससे ये याद रह पाएगा. The detail is basically help you retain the information also. AquaConnect क्या है? ये 2017 में फाउंड हुआ एक स्टार्टअप है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, तमिलनाडु में. AquaConnect has also been recognized as the best agri startup in application of digital technologies 2021. The most innovative AgTech startup, mature stage 2022 by FICCI. Thereafter comes Tata Consumer Products to acquire packaged water giant Bisleri. This much will be the amount of deal. Tata Consumer is set to acquire India's largest packaged drinking water company, Bisleri, for an estimated this much. The chairman Ramesh Chauhan is aiming to disinvest Bisleri International to Tata Consumer Products 3 decades after selling soft drink brands Thumbs Up, Gold Spot, Limca to Coca-Cola. The current management will continue for 2 years as part of the deal. Chauhan's ill health and daughter Jayanti's lack of interest in business is driving him to sell off the company. Selling Bisleri is painful decision. He said that
and this is the further development. Tata Group houses its consumer business under the Tata Consumer Products Limited, which also sells packaged mineral water under the brand name of Himalayan, with brands as Tata Copper Plus Water, Tata Gluco in the hydration segment. The deal would provide Tata Group FMCG arm a larger play into the fast-growing bottled water segment. Thereafter comes the art and culture. रिवर फेस्टिवल गंगा उत्सव 2022 नवंबर 4 को मनाया गया. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति hold 2 different sessions of Ganga Utsav, the River Festivals 2022 on November 4, 2022 at the Major Dhyan Chand Stadium in New Delhi. The National Mission for Clean Ganga, the Department of Water Resource and River Development, Ganga Rejuvenation, and the Ministry of Jal Shakti are working together to arrange the Ganga Utsav, the River Festival 2022. So River Festival 2022, Ganga Utsav will feature the mix of art, culture, music, knowledge, poetry, dialogue, and storytelling. Dr. G. Padmaja and Padmasri, Sri Banerjee, Ms. Megha Nair and Sri Bimal Jalan will be honored during the ceremony. Which will be placed in New Delhi. Now science and technology. Sweden's Saab is set to facility in India to make M4 rocket launcher for Indian Army and export. इतना ध्यान रखिए बस, बहुत ज्यादा और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. स्वीडिश कंपनी है साब. साब का आपने नाम सुना पहले? स्वीडिश कंपनी का किसी ने? साब जो है वो ऑटोमोबाइल भी बनाती है. मैसाराटी, साब, ये सब एक ही ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं और ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी एग्जिस्ट करती है. डिफेंस की न्यूज है, इसको बहुत ज्यादा क्या है डिस्कस करें, बट ये इंपॉर्टेंट थी थोड़ी. एक तरह का ये एफडीआई है, फैसिलिटी सेटअप होनी है इंडिया के अंदर, तो ये इसको हम एफडीआई बोले. Now, India's first privately built rocket set for suborbital launch with 3 payloads. ये न्यूज आपने काफी सुनी भी होगी, काफी लंबे समय तक ये न्यूज़पेपर्स में और न्यूज मीडिया में इसमें न्यूज चैनल्स में रही है. India's first privately developed rocket Vikram S by Hyderabad based Skyroot Aerospace, ये ध्यान रखिएगा, is poised to create history as it undergoes final launch preparations at the ISRO, Indian Space Research Organization's launch pad at Sriharikota, and is set to launch between November 12 to 16. The mission name which allocated or which dedicated to this particular you can say mission, the name was the Prarambh, meaning the beginning, since it is the first mission for the Skyroot was unveiled by ISRO chairman S. Somnath, ये ध्यान रखिएगा, in Bengaluru after the technical launch clearance from space regulator in space. Space regulator in space है. Skyroot is the 2-time national award winner. It is the first startup to sign the memorandum of understanding with ISRO in this regard. Skyroot's launch vehicle are named Vikram as a tribute to the founder of Indian space program and renowned scientist Vikram Sarabhai. Sarabhai S rocket getting launched is a single-stage suborbital launch vehicle which would carry 3 customer payloads and help test and validate majority of technologies in Vikram's series of space launch vehicles. Thereafter, ISRO successfully conducts test of C-20 cryogenic engine
for LVM-3 launch. ISRO ने hot test किया है, conduct किया है C-20 cryogenic engine का, cryogenic engine 20 का, indigenously developed, जो देश में develop हुआ है, for launch vehicle Mark 3 and GSLV Mk3 at an uprated thrust level of 21.8 ton for the first time. There are few of the developments. A few of the aspects of this cryogenic series. C-20 cryogenic engine will be tested as gone through the major modification compared to the previous engines, with thrust control valve for thrust control being introduced in the system. In addition to 3D printing, LOX liquid oxygen and LS2 liquid hydrogen turbine exhaust casings were inducted into the engine for the first time. These are few of the technical details. ISRO जो है वो 1969 में गवर्नमेंट की स्पेस जो वेंचर्स हैं उसकी एक बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में कर्नाटका में है और चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसरो एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये काम करती है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्या डेवलपमेंट रहा नवंबर मंथ में? गुरुग्राम को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी दिया गया पार्क टू कवर ओवर 10,000 acres. World's largest jungle safari park to be developed in Haryana. World's largest jungle safari park will spread across 10,000 acres in the Aravalli mountain range of Gurgaon and Nov district. This project will be the largest project in the world. The proposed area to build world's largest jungle safari park is Aravalli Hills. तो अरावली जो रेंज है वो दिल्ली के आसपास के रेंज में भी एरिया में भी लगती है। The park will also include the large herbarium, aviary, 4 zones of big cars, a large area for herbivores, an area for exotic and exotic animals and birds, underwater world, natural trails, visitors, tourism zone, botanical garden, biomass, equatorial, tropical and coastal deserts. For making the world's largest jungle safari park at the Aravalli Foundation will be set up, which will manage the project. Thereafter, Income Tax Department's Harit Aikar initiative to promote greenery and establish microforest. Income Tax Department ने स्पेशल कैंपेन स्वच्छता में पार्टिसिपेट किया। 1 महीने लंबा ये प्रोग्राम था। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर इनिशिएटिव स्टार्ट किया। Income Tax Department commits to increase the amount of greenery around its offices and other public locations by planting trees, establishing microforestry as part of this effort. Tree density and biodiversity are maximized in microforest, which are small and planted forest. Akira Miyawaki, the Japanese botanist, developed the Miyawaki method in 1980 as a way to grow a microforest on the little piece of land. या ये आपने टेड टॉक इंडिया एक शो आता था जिसको होस्ट करते थे शाहरुख खान साहब, उसमें भी अकीरा मियावाकी का जो ये कंसेप्ट था इसके बारे में बताया गया। उसके बाद मिशंस एंड स्कीम्स की बात करते हैं। उम्मीद प्रोग्राम इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ रूरल वुमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक जो उम्मीद एक स्कीम है जो सपोर्ट करती है रूरल वीमेन्स के एस्पिरेशंस को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये स्कीम बेसिकली नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है, जिसका काम है गांव से गरीबी को दूर करना और सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट के अवसर गांव के गरीब लोगों के लिए तैयार करना। Towards this objective, NRLM seeks to promote the sustainable community-based institutions which will facilitate provision of financial services, economic services, and other entitlement to rural poor. And this is the initiative under the umbrella of National Rural Livelihood Mission. So today I will discuss this much only, and the rest of the part of the
topics I will be discussing in the next class. Okay. And against that, I will be providing you a few questions. So good day to all of you and good night to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.